Assalamualaikum. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Should I start screen sharing? Yes. Okay, so I worked on the divisibility of polynomials. So for the Shahar, can we wait for a few minutes? Maybe okay, some sure, other participants can join. right, of course. So which problem are you going to present today? I'm going to present problems 3. So the one that I submitted, but I've like improved it because the other problems that I was working on were like separate parts. So I thought that it'd be better if I had like one Okay, complete problem. that's nice. Have you seen the recording from yesterday's session? Yes, sir. I watched as soon as I came back home. I watched that. Okay.
I think you can start. Maybe Okay, they're I'll do that. Okay, so the problem that we're presenting today is problem number 3, divisibility of polynomials. So the first question asks us to find the polynomials px that divide 2x. So for that, we can begin by considering that the roots of polynomial b are the square roots of the corresponding q polynomial. So if we write px in the form that I've illustrated above, showing the roots and the constant in keeping with the polynomial theory, and we substitute the value of the input function as x raised to the power 2, then if we infer that all the roots of p of x have a corresponding root in q of x, we can see that q raised to the power square will always be positive. So the roots of p of x will either also be positive or they'll be complex numbers expressed with a zero imaginary part. I'll move on to the next one. So for question number 2, again, I have expressed the polynomial in the form shown above. In terms of the leading coefficient and serving as an indicator of the degree of the polynomial. So that will help us to identify the preliminary nature of the polynomial as it starts to exceed to like really big numbers. So for this polynomial to divide p case power 2, the chosen term, so for it to like hold true for infinitely positive integer, the leading terms of both the polynomials have to like divide, so that'll be equal. The leading coefficient will translate to 0, so that means it'll have no variables, only constants, and thus you have a 0 polynomial. For the third one, we'll follow a similar approach to part 1, and again we'll write the polynomial in the form that its roots and constant term is expressed. Again, using the polynomial theory, we'll see how the corresponding roots into relation. So if we substitute into polynomial x raised to the power m, we have a corresponding root in the polynomial q. It's either an integer m that is positive and even or odd. So if it's even, it'll either be a real root, and if it's odd, then it'll be real or a complex number with an imaginary. For part 4 of question 3, we will by expressing the polynomial as a sum of its interior monomials, so the first constant term and the following degrees of variable power. So this will allow us to like simplify the inference whether each monomial in p x raised to the power sy has a corresponding factor in x raised to the power t. So that now if we consider another multiple of the x raised to the power s, for this to divide x raised to the power t, it must be a greatest common factor of s and t. Then for question part 5, we can again express the polynomials as the sum of its polynomials, and for this time for pxy to divide px raised to the power k and y raised to the power m, we can simplify it by considering a multiple of pxy. This could be px raised to the power a and y raised to the power b. So essentially a needs to be a multiple of k and b needs to be one of y. For 6, it asks us to investigate analogous questions for polynomials. So to do so, we will follow an extension approach of our previous parts by now considering the principles of polynomial divisibility in the larger spectrum of rational coefficients, not just real or complex ones. So we can utilize tools like application of the fundamentals of polynomial long division to investigate divisibility relations and partial fractional decomposition aided by irreducibility of polynomials, where it becomes easier to evaluate if the expression can be simplified and thus approached in terms of its respective components. And although as illustrated by the above, operations remain largely the same, and inaccuracies may be involved while
dividing that can introduce potential errors. We can tackle this by using the rational roots theorem that's similar to the remainder factor theorem of polynomials and proving that p of x is equal to 0. However, this time we're dealing with rational coefficients. So the example that I've taken here is that q of x is equal to x raised to the power 3 minus x raised to the power 2 plus 5x minus 2, and we're dividing this by p of x, which is x minus 2. So here we get the remainder is 12 and not 0. So this shows the polynomials don't divide and their roots have rational relation. For question 7, we have to investigate analogous questions for polynomials with coefficients in Zn. So we need to consider the modular arithmetic and divisibility within the finite integer space. The concepts here we can utilize are modular polynomial division, polynomial factorization in Zn, and the reducibility and irreducibility in Zn, while catering to its subsequent interactions. So here, if we take q raised to the power x is equal to 2x raised to the power 4 plus 5x raised to the power 2 plus 2, and p of x is 6x raised to the power 2 minus 2, both in Zn7, we will get a remainder 5. So yes, that again shows that p of x does not evenly divide q of x in terms of Z7. Then for question number 8, we have to investigate polynomials in terms of multivariables. So we can do that by dissecting it into like distinct sectors like homogeneous versus non-homogeneous polynomials, and we can even be aided by algebraic geometry. So to further increase, we can also observe complex dynamics of polynomial functions within conditions like rational coefficients or modular arithmetic. So if we consider a simple multivariable expression of px is equal x is equal to y, and q of x is equal to x raised to the power 3 minus y raised to the power 3, and we divide them, we do get a remainder 0, which shows that it is divisible as an inference. To the last part, which asks us to suggest and study other directions of research. I will admit I did not give this part that much time, but I thought that we could investigate the different types of curves and their intersection through assessment of polynomial families like the reciprocal or orthogonal polynomials, and again the conditions under which it takes place in accordance with the intersection theory, and then symmetry, transformation, and geometry of the specific triangle and exact points resulting from higher dimensions. Additionally, again, it's also in today's day and age, it's important that you take into account the real world applications of mathematical concepts, or any concept for that matter, and to like draw informed inferences. That's it. Okay, Imran Sahab, are you there with us? Hello, Imran Sahab. I think Sari is not with us in this meeting. Right. So, my first question, if you allow me to ask a few questions. Yes. Someone shared the solution to problem 3 in group. Have Yes. you seen the remarks that I wrote on the The complete one that we all did? I think so, yes. I have to check who has problem 3 part 1 Yes. and 2 done by me kind of thing. Yes, there's one. Okay. That we submitted with question 6. Let me see. Part 9 done by Shervano. So you did part 9 of this problem. Yes. Problem 3. So the first thing I mentioned, if you allow me to share my screen. Yes, sir. Can I share my screen? Sure, sir. So I have to I'll tell you something as well, as I told Ms. Noor as well. I actually do not take further math in A-levels. So the questions that I attempted were the only ones that we've covered in math, and that's why I only sent 3.
So I asked her, and she said that that could be arranged if I could have like additional sessions in terms of like if another question piques my interest. So you could help in clarifying some foreign concepts. She said that could be possible, but I wanted to check with you, both of you as well. I think, Yes, yeah. yes, yes. I think Okay, I'm the only person. The other people take further math. okay. So the first thing I didn't get from your presentation is the square roots thing, because when can you see my screen sharing? Yes. So the thing is that I have I have written a small example. Uh, Let me find it first. Of the ITYM that you are making about squaring and about the square. Here it is. So you see this example here. P of x, Yes. I simply chosen a polynomial with two roots. They are very obvious. You can see when will Yes. P of x be 0. Okay, Yes. it is 2 and 7, right? 2 and 7 are roots. But Yes. now what I do in next part is I squared x square minus 2 and x square minus 7. Now my roots in this case will be, for the roots of px square will be Under. square root of, yes, there will be 4 of them, because now this was degree 2, x times x. So this was a polynomial in x square. This p of x square, which actually is q of x, should be now an equation of degree double this number, which is 4. And that you can see from this, you try to multiply these two, x square and x square will give us x to the power 4. Okay, so what we expect is 4 roots for this equation, right? And So is it the roots use are obvious. binomial then? No, not binomial. We'll be using x square, because we have product of two things getting 0, this part and this part. So what we do is we take individual parts equal to 0. That is the only thing can happen, right? I If meant product of two binomials for things, solving the question. So is it so I it's fine if I express it in terms of its root, but I need to understand that there's going to be more than two. no, That's all. I'm just taking this example. I'm just taking this Oh, okay. example to clarify a few things. Okay, okay. The first thing is that there is no such connection between the roots of p of x and roots of px square that you are mentioning. Okay. That you said in your talk. So what are the roots? So do you get this, that we have Yes, product of two things getting 0, so one of them should be 0, both 0. can be 0, but one of them should be 0. So I take this first factor of this p of x square, which is q of x, to be 0, and from here I get x should be square root of 2, of course plus minus, and x should be square root of 7. Both are irrational. Now I started with a simple cute polynomial which has two roots which are integers, and I check the dimension from x to x square to find q of x, and I see that the roots, they start to appear irrational numbers. Square root of prime is irrational in general. Yes. Okay. Okay, so from integer positive positive roots of a polynomial to even irrational and negative roots. Yes. Negative. Okay. Okay, so I Yes. don't see any direct connection uh, with the roots, and that is the factorization in terms of roots is possible under some constraints. Okay, the constraints is that whenever we take a polynomial f of x in general, we can express this in terms of roots like this equation. Whenever these roots, they belong to
our field of consideration. Like in one case, you are investigating Zn, that is a finite field. Yes. So If it'll hold true, right? all the roots belong to this finite field, then you can express it. Like in this case, if I consider this polynomial to be defined over integer coefficients, like Yes. this is 1 2 2 times 1 is 1, and whenever when I do the multiplication and expansion and all the things, I will get all the coefficients in Z. All the coefficients will be integers, right? Yes. Then I can say that this is a polynomial defined over integer coefficients. And then I can write the vector notation, the product notation, or this notation here, if all the roots are in Z. So the first thing it changes from P to Q, Px or P to x square, is that the roots have changed the field. Now they are real roots in this case. And real numbers are much bigger. The set of real numbers is much bigger. The both are infinite, but this is a bigger infinity than the numbers in Z. Okay. Right. So sir, Z, like, so that would be one of the few ways under which this roots connection could possibly work. That's what you're saying? Well, what I'm saying is we cannot establish, or at least so far I'm unable to establish Okay. a connection between the roots, because I have taken example of a polynomial which has integer roots, and then as a result which has irrational roots. I Yes. have Okay. uh, to work out more examples and things in order to clearly get this thing. Okay, Okay. so do consider this thing when you talk about roots, and when So whenever sir, then how two should I go polynomials about? have same roots, whenever two polynomials have same roots, the Yes. polynomials are identical, they're same. Yeah. Okay, so the roots of p of x and roots of p of x square cannot be The same, same. Yes. can never be same. No, sir, Okay, I wasn't saying that they're same. what other things you're making is Sir, I said that it would be the square root of that. that In will be in one particular case, yes, that will be whenever you have this form of this kind of relationship. representation. Yeah. But I'm saying that this kind of representation is not always possible. This kind Okay. of representation is So not sir, so then always what would you possible. use to like make sure that you don't get it wrong then? Sorry, I didn't get you. So you're saying that if I express it in terms of its roots and then try to find a relationship that might or might not work under certain circumstances. But So we are looking for p of x with rational coefficients. yes, Okay, yes, and they divide p of x square. So let me go through this paper that you have done. So the first thing is that let p of x be a polynomial with rational coefficients. It means that p of x is, I can write p of x as coefficients coming from for example, this is a rational number times x to some power, let's say 3 plus 1/7 x square plus 5. This is just an example. Okay, so I have polynomials of this type. So in general, what I can do is I take I don't take these hardcode numbers. Instead, I take variables a3, not variables, the coefficients a2, yeah, and this is the constant a0. I have the missing coefficient for x, which is obvious that it is 0 in this case. yeah. So my polynomial, I can always express polynomial in this notation, that a n minus I x to the power n minus Mm, I goes from 0 to n, yeah. and here I need to specify some
important concepts associated to polynomials. The first thing is degree of a polynomial, that I denoted as degree of p of x. Degree is the highest power of x Yeah. such that the coefficient is non-zero. Like I can write 0 times x raised to power a million, but this won't be playing any role. So this is not the degree. The degree would be the coefficient of highest power is non-zero, then I call the number degree. In this case, degree is 3 because I have a coefficient of x to the third power which is non-zero. Okay, Yeah. and what happens when I uh, replace x with x square? The degree gets double. Yeah. Okay, and here somebody was mentioning about the polynomial remainder theorem, but polynomial remainder theorem is something specific case, which is saying that if we can It's divide f of x with a this factor. thing, if this is a Yes. factor, then f of a is the remainder of a polynomial when we divide by this thing. So it's I don't know how it is playing role in this part because we are not looking at any remainders. Whenever we say two numbers divide, if I say 2 So are divides they 2 divides 10, I mean that 2 completely divides 10. There exists one whole number such that 2 times the whole number should give me 10 without any remainders. And 2 does not divide 11 because whenever I divide 11 into even parts, I will have a remainder of 1. So the idea of division should be clear. And then we can write q of x as p of x times some other polynomial. Okay, and here I am trying to explain that q of x should be p of x multiplied by d of x. I choose p and d just because you have chosen here, and yes. r of x as remainder. This is always possible because this is Euclidean division, and this is a generalization of Euclidean theorem or Euclidean division for numbers. For any two numbers, 5 and 7, for example, for any two numbers, I can find two other numbers such that I can write one number in terms of 5 times this number a plus b, and b should be less than 5. Okay, in this Yeah. case a is 1 because I can divide 7 into 5 times 1 plus remainder is 2. Okay, So so this is always possible for any pair of numbers. I can find another pair of numbers such that this equation holds, and this is true for polynomials. as I well. have a polynomial q of x and I have another polynomial p of x. Then I can always find two polynomials d of x and r of x. R, just to make sense of this is the remainder part whenever we divide this equation with p of x. Okay, and division would mean that this polynomial in the remainder is 0. In this case, what happens is It's that when I divide 10 with 2, I can write 10 equals 2 into 5 plus 2, 0. 2 into 5 plus 0. So this 0 should be less than 2. And the less than 2 condition in polynomials is either r is equal to 0, or we can say that r is a lower degree polynomial. It cannot be degree same as p of x. So the It can be linear. degree of remainder should be less than degree of p of x. Okay, Yes. and uh, I try to strike through these lines just because they are a repetition of whatever has already been written. So I said that we know it already, the degree is half. So by this line, I mean that degree of p of x square, degree of p of x square is twice the degree of n because we are Of x, yes. writing, yes, we are writing polynomial in this form, and this is the degree because we assume that we start by taking a n non-zero. A n should be non-zero, even if for completeness you can write a n is non-zero just to make sure that the degree is n.
and all the coefficients are coming from rational numbers. Then q of x will be, what I do is I replace x with x squared to get this thing. Okay, it's mentioned that I have just changed x to x squared, and I have same coefficients. They are coming down. They are the same coefficients of, if I try to work out this for the polynomial that I have taken, 2 Okay. by 3 x cube. Now the same polynomial will be, let me choose color which I haven't choose. This purple will probably work. So the p of x in above example will be 2 on third x to the power 6, because x2 square or x3 cube, sorry, x2 cube or x3 square plus 1 7 x to the third, plus, sorry, I need to x to the fourth power plus 5. Okay, now Yes. we have to check, this is p of x square, so we have to check that when p of x divides this thing. Okay, Yes. that is what we have to answer in this problem. And again you have repeating the same thing, repeating the same polynomial, an, a1, a0 are rational, and n is non-negative integer. This information should have been on top, on top when you define p of x, so that is fine. But look at this thing at the end of this is good that you try to express the polynomial in terms of its roots, because the above expression is giving us the privilege to write it as sum of monomials. Okay, sum Yep. of these kind of things. And when Yes. we know all the roots are from the same field, then we can write the same polynomial as product of these factors. Okay, product of x minus ri. Do you know this notation? This is for the product. We multiply all these linear polynomials, and whenever two polynomials have same roots, they are identical, they are same by this theorem. Okay, we have the same expression for both of them Yes. in terms of roots. So I concluded this result. Okay, let's assume that we have the second case, which you were mentioning in this part, which says that so if you want to q of x have the same roots as p of x, then this thing should happen. Okay, this thing Yes. should be same. From this we can cancel out the things and then prove that this can only happen if the roots are 0. What happens when we put roots as 0? So r is 0, this thing vanishes, this thing vanishes, this thing vanishes, and we get q of x as the constant, which is a rational, time x, whatever this 6. power gets is just 2 times n. If this was p to the p is equal to c times x to the n, and this is the case when p of x will divide q of x, right? Because this is obvious, right? We can Yes. always divide this thing. C divide c, that will be 1. The result will be x to the power n. So Right. I can only take p of x in this case to be c times x to the power n, and if I multiply by again x to the power n, I get q of x. So this is the case when d of x is this polynomial here, then I get the division of polynomials. Also, in case of if this degree is 0, because this is for all possible values of n, this is true for all positive values of n, and this is even Yes.
true for 0 as well. If this is true for 0 as well, then what I get? I get p of x is simply a constant. There is no x. Okay. So if So it'd no be a zero x, then polynomial then? no. This can be any constant polynomial, any constant that is a rational number. 0 will also be a rational number, right? Yes. So 0 is just one rational number. No, the polynomial is not 0, but it can be 0, but it is a constant. Constant means it can be 10, 2 by 5, any rational number, any rational number, big or small, you can think of. And p of x square will be constant because there is no x to take the power up, right? Or you can Yes. also say that this is x to the power 0. If I take x to the power 2 times 0, again I will get x to the power 0, and anything to the power 0 is 1. X to the power 0 is 1. Yeah. Okay. Okay. So this Yeah. this is what I think is a working thing. Okay. And I have this rational polynomial kind of example where this is, try to divide this. I don't know if it will be divided by the same polynomial. So p of x what have we p of x considered p will of x as? p of x is 2/3 x to the power 3, 1/7 Okay. x square plus 5. Okay. Okay. Yes. So now you get what is happening in this whole division kind of thing. Yes, So sir. you have to consider a lot of things in consideration. That is, for example, degree, roots, field. By field I mean the quotient, the coefficients, Yes. the coefficients that you are taking from. Mhm. Also, what do I mean by division? It's a constant polynomial as well. And all the things. Yeah. Constant polynomials, yes, of course. They're polynomials of degree 0 that we call constant polynomials. And so when you the presentation that you presented, that is not containing enough information, so you are Yes. you are orally presenting the thing. So at least I will share a sample of mathematical presentation. It only contains these kind of equations, no statements, no arguments. If I write this polynomial p of x and p of x square, and when I explain that this is my p of x and I'm jacking up the dimension, jacking up the degree to 2, this is obvious that what I have is in correspondence. This is the first thing that you should start with this polynomial. Oh. And in all possible cases. So this is p of x. When you have p of two variables x and y, then you can simply write the same thing with coefficients I, j, x to the power n minus I, y to the power n minus j, and all that in some representation, summation notation. That is, this is called summation notation. And I don't know whether you can always write the variables, polynomials of two variables in the roots notation. I'm not sure about the product representation until you have a very interesting case that each of the monomial is x times y, and then some kind of this thing happens, such that they come always, they come together. I don't know. This is this must be a very wishful thought to have. We in real, we don't have such polynomials, you can imagine. And Okay. one big mistake you are making is that when you say that we have a complex number a plus iota b with E. zero imaginary part, means this thing vanishes and what we remains with is just the real. Okay, so there is no such thing.
as a complex number with zero imaginary parts. Zero imaginary part would mean that we don't have any imaginary parts. Okay, Okay. so that's same as real. Or if you are defining these to be integers, and integers time iota, they are called Gaussian integers. Again, Right. saying that imaginary part is zero means you are just talking about the same, when we represent this is the real number, this is the iota times real number. So any point here would be a plus iota b. We walk x real part and a real part, and iota b is the axis on which we walk in b units. When you say that this b is zero, it means that we are on the real line. Exactly. Okay. Yes. Okay, so going to the next thing is again I should scroll down in the same page instead of reading it from the paper. You see here k is an integer, so this thing happens for, let's begin by considering the relationship between pk and pk square. Pk to pk means there exists polynomial dx, uh, dk, if you can think of dx, because this is no more a polynomial. This is what we call evaluation of a polynomial. Yes. Don't worry about these big cumbersome words. Evaluation is nothing but we substitute x with some integer, some Yes. number, not integer always, any number k, anything k. For example, the same p of x above with rational coefficients 2 upon 3 x to the power 3 plus 1 divided 7 x squared plus 5. I can find a polynomial p of my friend. If I replace friend here, I should get 2 out of third friend to the power 3 plus 1/7 of friend square. So that is what we evaluation. If I evaluate this polynomial at my friend, if if it is x, then I should replace it with x. If it is k is a number. Now you have to understand one very important detail in this thing, and that is you should have division for infinite many k. P of k, this vertical lines means division, so we avoid writing the big word division or divides. Instead we write this vertical slash longer than a slash line to just show that this is division. Okay, pk Right. divides, we read this as pk divides, this is a vertical line. And if we put a small cross like this, that it means that pk does not divide. Okay, so in this case I'm taking pk divides pk square. This is so this thing should be true for p of 0 should divide p of 0, that is obvious. Okay, until p of 0 is a zero polynomial, then we cannot make sense of division. Otherwise this is okay to say that p of 0 divides p of 0 if it has a constant term. P of 0 would kill all the terms that contain the variable x. Okay, if I put 0, I get 0, I have 0, I remain with 5. And if I have 0 square, again I have 5. 5 divides 5, and that is okay. So this is the base case. uh, I always, encourage you people to experiment with the simplest case until you find a pattern and try to generalize the pattern, or try to explain the pattern in mathematical way to summarize. Okay, without experimentation, dealing with the general polynomials or general thing in any form would be too difficult. Okay, that's Right. not a good suggestion. uh, it's a suggestion that you can give your enemy. Okay, Right. so p of 1 is p of 1. Okay, fair enough. P of 2, for instance, should sorry, not equal to p of 1 divides p of 2 should divide p of 4. Now you have this case. Okay, this is a generic case. I'm
taking k to be k equal to 2, and it should divide p of 4. So what kind of polynomial would this be? What kind of polynomial would this be, that whenever I put 2, whenever I put 4, it has the division property? I can think of a constant polynomial, because it is, independent of any such events when we have p of 2 and p of 4, until it's a constant polynomial. So हाँ, ये एक और जो चीज थी that you guys were missing, that when q of x is divided by p of x, the degree of d of x in this case, it should be equal to n, because this is 2n, this is n, so this should be n, no less than or greater than n. This should be equal to n, Okay. because when we take product of two polynomials, like we did in the x square kind of example above, we have x minus something and another x minus something. The degree is 1, degree is 1, so the degree of the resulting polynomial should be 1 plus 1, which is 2. Like, oh, here's another example, that x to the 4 can be factored into x to the power 2. Even I can further factor this into linear, x minus 1, x plus 1 times this thing. So degree 1, and degree 2, 1, 1, and 2 will make it degree 4. Okay. Yes. So, and I was surprised to see that all of a sudden p of x and q of d of x start to be monic polynomials. I don't know. It was interesting to see and surprising that all of a sudden monic polynomials start to appear. In case of p of x, you can define some other polynomial by dividing with if I take again the same example, p of x 2 by 3 times x to the power 3, and all the terms I multiply this polynomial by 3, I get or in fact I can multiply this by the reciprocal of this, whatever the coefficient is. If it is a, then I can always find 1 over a and multiply this polynomial to make it monic. So I'm not sure how it is going to be useful or not useful to make it a monic polynomial, but it is interesting. So p of x is this thing, and d of x is some other thing. Now, one way, one way would be, I think you should try to do this thing instead of going through the long division and pain of calculating a lot of things. You should write q of x equals x equals to p of x times d of x. Okay. And what is q of x? Take the same example. Take the same example, or you can. I think it would be better to take the general. The general. I'm confused whether which one is easy. 2/3 of x to the third. Sorry, x to the 6th power plus 1/7 of x to the 4th power plus 5. And p of x. P of x is 2/3 x to the third plus 1/7 x to the x squared plus 5. And what is d of x? D of x is this kind of polynomial. At least I'm sure that it should be of any polynomial of degree 3 with some coefficient a times x to the third plus b times x squared plus c times x plus d. Now try to find a, b, c, d. Take product of these two, okay? Yeah. These two polynomials, and Yes. compare the coefficients on both sides. This will be, so 2 by 4 by 3 3, 2 by x. 3,
should be equal to 2 by 3 times a, That's right? okay. And I compare the coefficients of x to the third only at this. Yes. Yes, So won't it be easier to find the constant term first and then move forward? yes, both are easy because they only Of appear one once. term. Otherwise, the lower degree terms would appear. For instance, Simultaneous. the Yes. degree 5 coefficient will appear from these two cross terms, first from the um, first polynomial and second from the second polynomial, first from the second polynomial and second from the first polynomial should appear the degree 5 terms and all that. So 5 equals 5d. At least I'm sure that constants would only appear as product of this. So from Yeah. these two equations, I can find that a should be equal to 1 and d should be equal Use to one. 1. Okay, a is 1 and d is 1. We can substitute it together. You Here, can you should try to find like the find entire you should try to equation. yes you should try to find the entire equation and see that whether it works, and you have to classify on basis of these calculations that what should be the p of x, what should be the shape. At least we have derived that if p of x is equal to what, equal to a not a monic, equal to a monomial, just a monomial constant times x to the power some n, then we show that the requirement is satisfied. Whenever we substitute x with x square, this polynomial will always divide it. So from this example, this is just one example, okay, you can find that what should be the other uh, factor of q of x if one factor is p of x. Okay. Yes. uh, so try to experiment. But At least you should divide 10 okay. 10 random equations. By random equations I mean you change the monomials and see what happens, what is the Here, I have connection one between question. the coefficients of a, b and c. And I This for the when we're saying p of x is equal to q of x into d of x, that d of x exists only when there's a remainder, right? d of x exists only remainder is 0, Yes. because Okay. complete division would mean that there is Yes. no No other. remainder, no remainder. So if it is a multiple, in fact, then there would exist no d of x. Yes, Should we r of should x we should be also 0. incorporate that as like a second sort of to like just show how there's like different ways, or is it fine if we do not do that? I think if you uh, start by considering the remainder as well, it would uh, let me think. No, because complete division would mean remainder that we are assuming r of x. This thing should be 0. That is what we are Okay. taking. Okay, Okay. and if you consider that there is a remainder, so from what your question, I get this, that you have q of x and you have p of x, and you try to apply the Euclidean division, right? Yeah. So you want to write q of x is equal to p of x times what should be the other? This is p of x. Let me choose you what you have chosen earlier. D of x times Plus r of x, and you have to zero. take this to 0. Yes. It will not be 0 at this moment whenever you Is do being this, added. and Yeah. you have to find what are the possible scenarios, what should be the shape of p of x such that this r of x is 0. In fact, r of x should be identical to 0, so we put a third dash that this is 0, more than just being a number equal to 0. This is
This is a, you know, congruence to 0 kind of notation. Right. So far so good. Yes. So I do Uh, not include this as part of a solution. yes, yes. For Okay. sake of completeness, you have to incorporate this thing as well. Yeah. And the later two parts, let me see which I have where is, and the later two parts, because Ryan is waiting to present his talk. So Oh, okay. in the later two parts, once you understand these two and are able to completely classify the polynomials with the given requirement, then you can you know uh, try this for 3 maybe. Yes. Yes. The same part one. Yeah. And in this case you have two different two polynomials with uh, two indeterminants or two variable polynomials in two variables. Okay, this should not be very different than polynomials with one variable, because polynomials with two variables can be considered as polynomials with one variable, like you Yes. take care of one variable at time and then That. go for the second variable. Yes. That is what we call ordering. And we ordering by ordering, what do we mean? We mean that I give preference to x, like if I have the degree will, in a way, I'm not trying to make it difficult, so that's why I'm mincing the words a bit. But you can take the uh, second second variable to be playing role of the constant part for a bit, and then you try to include this thing as well. So you have seen these polynomials kind of x, and then I have another x times y. Here's why I try to write these polynomials in decreasing degree of x, and then I have something y to the power 10, because I consider x to come before y. This is like in dictionary, a comes before b, so x comes before y. So this is one possible ordering. This is called the lexicographic ordering. Lexicographic ordering is the same order that words in dictionary are. So apple will come before before b, the words with b, and then they follow this order. So x square should come before x, y. So this is degree 2, degree 1, and here is degree 0. But if you see that this is increasing a degree in y. So first you can consider that this is polynomial in x and try to take care of x thing in the whole polynomial, and then talk about what happens when we think of y as a variable. Uh, Right. Analogous question for Yeah. polynomial with rational coefficients. We already having rational coefficients, so I think this would be a typing mistake, because what we have been investigating is for rational coefficients all the time, and why we should investigate analogous questions. Analogous questions for something like real coefficients would be another dimension. Coefficients in Zn, that is the finite. And I find it worth mentioning that whenever you reduce a polynomial, for example, p of x is equal to 10 x to the power 5 plus 7x, and I reduce it, if I take n in this case to be 3, for example, then Yes. this coefficient is 1, x to the power 5, and 7 is also 1, right? Because whenever I divide 7 with
3, I get remainder of 1, and same for 10. Yeah. Okay, whenever I reduce this with in 2, this is mod 3. If I On reduce 2. this mod 2, this is 0 x to the power 5 plus 1x. Okay, this is how the reduction happens. We reduce all the coefficients. We do not you know we don't touch these variables. Don't try to reduce this degree, or don't try to reduce the whole polynomial, or only the constant. So we reduce all the coefficients, because we now changed our field from rational or integers to finite field. Okay, and you have to do the same polynomial for more than 2 variables. Now you have a variable x, you have variable y, and you have variable z or t, w, any character from any alphabet would work. Suggest other directions that you already did. So I think that this overview is helpful. So Ryan, are you with us? Sorry, Riham, if you want to ask any questions, or you want to discuss any other problems, so that then we go to Ryan. No, it's quite alright. Ryan can move forward with his first and then get back. Well, this seems easy, but this is one of very, the problems that look easy, but when you deep dive in, you find all the things. Yeah. As algebra has been in development for more than 200 years, so there are gazillions of definitions, and a lot of things. But one thing that will always help is experiment with the simplest cases, and then try to look for what are the general, uh, what should be generalization of this thing. Try to find out patterns. So try to experiment with a few polynomials. Also consider polynomials of this type. P of x is this thing, and then q of x is x to the power 2n plus 1, and I want to write this as x to the power n plus 1, and I have all less than x to the power n, and all the lower degree terms, and try to find the coefficients of this d of x, because this by default I am assuming that r of x is 0. Okay, so try to find the coefficients and then classify all p of x of this type. Okay, Ryan, are you with us? Yes, Assalamu alaikum. Can you hear Walaikum me? salam. Yes, we can. How do I stop sharing? Okay, I stop sharing my screen so that you can go on, Okay, yes. and stay with us. Don't try to leave early. Yes, Ryan. Yes, give me 1 second. I am sharing my file. Is my screen visible? Can you see my Yes, screen? we can see. Yes. Sorry, I was muted for the Okay. time. Okay, so um, सबसे पहले I'm really sorry that I couldn't make it to the meeting yesterday. असल में फर्स्ट नंबर तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के साथ बहुत बिजी था. I'm sorry for being late. इंटरनेट के इश्यूज अभी आ रहे थे मेरे. But here the problem I will be presenting right now would be question number 6, जो डाइफेंटाइन इक्वेशंस के ऊपर था. खैर ये मैंने ग्रुप के अंदर कुछ दिन पहले भेजा था. एंड मैंने जो आपने एनोटेशंस की थी सज्जाद, मैंने उनके बारे में सवाल भी पूछने थे कुछ. बट खैर अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब while I was solving this question मतलब मैं क्या सोच रहा था, like what my understanding was.
Okay, for part number 1, consider the congruence y square is congruent to x cube plus m mod n, where m and n are greater than or equal to 2 are given integers. When n is congruent to 2 mod 3 is a prime number, show that the number of solutions x, y is a subset of zn x zn does not depend on it. Okay, so first of all, we need to understand what the question is asking. So from what I understood, so yeah, we basically had to just find different solutions of y square is congruent to x cube plus m mod n, where n is greater than and equal to 2 and a prime number. And we had to show that the number of solutions was not dependent on m. Okay, now, first of all, let's to make things simpler for ourselves, let's just take n to be 2, which satisfies our condition. 2 is a prime number and also greater than or equal to 2. So we already know the value of z of 2. So as the notation for zn is zn goes in 0, comma 1 and goes till n minus 1. So z of 2 would be 0, comma 1. So z2 x z2 would give us 4 separate solutions, which would be 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1, as shown from the example above. And when we get these, अच्छा तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ ना x और y की जो वैल्यूज थी वो प्लग इन कर दी थी इक्वेशन के अंदर, और मैंने 4 सेपरेट इक्वेशंस बनाई थी। यहाँ जब मैंने 0, 0 प्लग इन किया तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू m mod 2, 1, फिर दूसरी इक्वेशन थी 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m mod 2, फिर 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस m mod 2 एंड 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस m mod 2। तो यहाँ हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू शो के the value of m does not basically the number of our solutions does not depend on the value of m। सही है। तो फिर इसके अंदर बिकॉज हमारे पास mod 2 है और mod 2 के साथ हमारे पास बेसिकली 2 पॉसिबल सोल्यूशन होती है ना, या तो 1 या 0। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ m इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल m इज इवन, तो हमारी जो इक्वेशंस 1 एंड 3 हैं दोज विल बी ट्रू, and if m is odd then our equations 2 and 4 stand to be true। तो टेक्निकली दोनों दफा दो दो सॉल्यूशंस हमारे पास करेक्ट आती हैं। तो बेसिकली जो भी वैल्यू ऑफ m है हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ जाती हैं। एंड बेसिकली मैंने इस तरह से प्रूव करने की कोशिश की थी कि हमारी सॉल्यूशंस डू नॉट मैटर, डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ m, बिकॉज आइदर वे हमारी सॉल्यूशन सेम आती हैं। ये जो दूसरा मेथड था दिस वाज मोर लाइक एब्स्ट्रैक्ट, आई डिडंट रियली फोकस मच ऑन इट। मेरा जो पहला मेथड था वो मुझे खैर ज्यादा समझ आया था। दूसरा मेथड मैंने पूरा उस तरह से किया भी नहीं बिकॉज आई थॉट कि इस तरह से नहीं होगा। आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू लाइक एक्सप्लेन कि आपने ये प्लीज जो एनोटेशंस की हुई है जरा सी अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे आफ्टर आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन, बाकी पार्ट्स भी एज वेल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंसिडर द इक्वेशन y square plus kb square is equal to x cube plus a cube, determine all or at least several integers a and b such that the equation has no solution in non-zero integers x and y। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। तो हमारा पहला पार्ट इस k इज इक्वल टू 0, दूसरा k 1 है, तीसरे में k 2 है, चौथे में k minus 2 है, एंड फॉर e k इज ग्रेटर देन 2। आज सबसे पहले इसके लिए जो मैंने अप्रोच यूज की थी सबसे पहले पहले पार्ट के अंदर बिकॉज हमारे पास के तो 0 है। ओके, तो बिकॉज के इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी बी स्क्वायर, तो इसके अंदर बिकॉज के इज 0 हमारा हम बी स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी इट वोंट रियली the solution of our equation won't really depend on the value of b square। So b square can be any integer because we're finding values in terms of integer now। So b square can be any integer, b can be any integer। अच्छा, now let's come to the equation आगे। तो जब k 0 होगा तो हमारे पास equation आ जाती है y square is equal to x cube plus a cube। तो ये when our value of k is 0। Now let's take a cube to be n, and to and we basically now need to find values of n or values of a cube for which there will be no integral solutions to y square is equal to x cube plus n। अच्छा, now जब मैं रिसर्च कर रहा था on these types of equations, on Diophantine equations generally, तो ये वाली जो equation है y square is equal to x cube plus k वाली equations, these equations are basically known as Mordell's equations।
सही है, because of the extensive research model conducted on these in his life. ये मैंने research की थी जरा सी, papers के अंदर कुछ लिखे हुए थे, तो that's what I inferred. सही है। तो इन equations का basically ये सीन होता है कि they have a finite amount of integral solutions but an infinite number of rational solutions. Now the question can be answered using the Mordell curve. So ये basically Mordell curve क्या होता है? Mordell curve is an elliptical curve of this equation y square is equal to x cube plus k, where k can be any integer. All integral points on the curve would be solutions to y square is equal to x cube plus k. जैसे for example ये मैंने एक example graph भी दिया था, example curve भी दिया था. Basically curve Mordell curve इस तरह होता है, and any integer point which is lying on the curve would be an answer to our equation. सही है। Now अब हमें देखना है कि when basically when n is equal to -27 now we can see that there are no integral points which intersect the curve. तो basically जब n -27 होता है तो a cube is equal to -27, तो a would be -3. तो basically पहले पार्ट के अंदर ये आंसर निकाल लिया कि our value, one of our values at least, no, even if not all, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है, our value of a would be -3 and our value of b can be any integer. सही है, and for these values हमारी जो मॉडल कर्व का आंसर होगा that will be non integral solutions except for 0. Now let's go to the other parts. अच्छा basically जो मॉडल इक्वेशंस है ना उनके ऊपर अभी भी ऑफ कोर्स बहुत सी रिसर्च हो रही है. दीज आरंट रियली हैवंट रियली बीन लाइक फुली सॉल्व्ड. काफी हद तक ये जो सॉल्व हुई होती हैं वी कैन फाइंड देम ऑन द इंटरनेट, बहुत ही वेबसाइट के ऊपर इनके आंसर्स बने होते हैं. और ये आंसर्स किस तरह निकले होते हैं? ये आंसर्स हमें ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल के लो कोड से निकाल लेते हैं. तो ये आंसर्स ऑफ कोर्स इसके पीछे मेथोडोलॉजी पूरी डिफरेंट होती है, लेकिन ये आंसर बेसिकली ये मॉडल कर्व के साथ सारे निकाले हुए हैं. जैसे मैंने टेबल उठाया था फ्रॉम द वेब टू मेक द पार्ट इजियर, ताकि जरा सिंप्लीफाई हो जाए. बेसिकली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n यहाँ दिखाया हुआ है कि हमारी कौन कौन से इंटेग्रल सॉल्यूशंस हैं ऑन एंड किन वैल्यूज ऑफ n के लिए हमारे पास इंटेग्रल सॉल्यूशंस हैं नहीं. एंड दिस गोज फ्रॉम n इज इक्वल टू -25 टू n इज इक्वल टू 25. अच्छा, now for part B, our equation would be basically when k is equal to 1, y square plus b square is equal to x cube plus a cube, which we can simplify to write y square is equal to x cube plus a cube minus b square. अच्छा, जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमने a cube is equal to n लिख लिया था, इस पार्ट के अंदर हम लिख सकते हैं a cube minus b square is equal to n. सही है. एंड देन वी वुड यूज द सेम मेथोडोलॉजी. सही है, जैसे हमने पिछली दफा n की ऐसी वैल्यूज फाइंड की थी फॉर विच हमारे पास आंसर नहीं थे, क्या कहते हैं, हमारे पास इंटेग्रल सॉल्यूशंस नहीं थी. सही है, इसके अंदर अब हम कोई भी वैल्यूज ऑफ n निकाल सकते हैं फॉर विच द वैल्यू ऑफ n वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन a क्यूब माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू n. बेसिकली यहाँ a क्यूब और b स्क्वायर की अगर इंटेग्रल वैल्यूज आ रही हैं फॉर दैट वैल्यू ऑफ n, तो फिर वो हमारे आंसर्स होंगे. सही है, और जब हमारे पास लाइक इस इक्वेशन के साथ कौन सी वैल्यूज ऑफ n सेटिस्फाई करती हैं, वी कैन टेक द वैल्यूज ऑफ 7 एंड 11. तो हमारे आंसर्स हो जाएंगे फॉर a and b to be 2 1, where 2 is a and b is 1, and then 3 comma 4. These would be answers for part B. Similarly for part C, same method used. हमने क्या कहते हैं k की वैल्यू 2 ले ली. यहाँ हमारी इक्वेशन ये बन गई इस दफा बिकॉज k की वैल्यू 2 and k is the coefficient of b square. तो अब हम दोबारा वैल्यूज ऑफ n लेंगे फॉर विच a क्यूब एंड b स्क्वायर वुड बी इंटीजर्स. बेसिक a and b वुड बी इंटीजर्स. हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज आ जाती हैं n की. n इज इक्वल 7 23 एंड 14. तो 2,1 3,2 एंड 4,5. ठीक है, सेम फॉर्मेट फॉर पार्ट डी. इस दफा k की वैल्यू क्या कहते हैं -2 है. इसके अंदर हमारी इक्वेशन n की वैल्यू आ जाती है -6 एंड -14. तो वैल्यूज -3,1 एंड -4,5. So that would be how to do question part number 2 of this question. अच्छा, now for question number 3. सबसे पहले of course this is a relatively simple Diophantine equation. We have to find all integer solutions of x and y of the following equation: x cube plus 3x square y minus 3xy square minus y cube is equal to 1. We can first of all add. Of course अब हमने ना इस इक्वेशन की मैनिपुलेशन इस तरह करनी है ताकि हम ना इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकें. हमने -3x² और +3x² 3xy² ऐड किया इस इक्वेशन में, एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस
यहाँ भी कर दिया टू बैलेंस आउट द इक्वेशन ताकि उसकी मीनिंग ना चेंज हो जाए, एंड देन वी फैक्टराइज इट टू गेट दिस x minus y होल क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने x और y कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 6xy इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास एक फैक्टराइज इक्वेशन आ गई है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 1। अच्छा, बिकॉज हमारा आंसर 1 है ना, जो हमारी पॉसिबिलिटीज फॉर दीज फैक्टर्स x माइनस वाई एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 6xy काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है। ओके, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम ले लेते हैं कि हमें बेसिकली हमें पता है कि इन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है इट्स इक्वल टू 1। ओके, let's say that let's basically we just have to substitute these into the second equation. Basically we took x minus y is equal to 1 and x minus y whole square plus 6xy is equal to 1 because of course 1 और 1 का product 1 होता है. So that would be our basic answers at least for x and y. तो यहाँ ऑफ कोर्स हमने साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया है. हमने इक्वेशन 1 को यूज करके सब्स्टिट्यूट कर दिया x इज इक्वल y प्लस 1 को इन द सेकंड इक्वेशन. तो इससे हमारी वैल्यूज आ रही हैं ऑफ कोर्स आफ्टर द वर्किंग आई शोड हियर y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1. एंड फॉर दीज टू सॉल्यूशंस ऑफ y जो हमने वापस प्लग इन कर दी इन द फर्स्ट इक्वेशन, हमारी वैल्यूज ऑफ x आ जाती हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. तो हमारे पहले तो आंसर्स आ जाते हैं 1 0 एंड 0 -1. And these also satisfy the original equation of course अगर हमने चेक करना है, and thus they are correct. ये दो आंसर्स तो हैं ही हैं. चलिए, इसके अलावा मेरे पास एक और आंसर था फॉर पार्ट बी. आई एम सॉरी, मैं उसको भी शेयर करता हूँ. Yes, and I'm gonna start sharing again. Is my screen visible? Yes, yes. ओके ओके. अच्छा, तो बेसिकली इसका ना मैंने एक और ऑल्टरनेट तरीका करने की कोशिश की थी बिकॉज मे बी मैंने सोचा था कि शायद और इसकी वैल्यूज होंगी लाइक विच बेसिकली सेटिस्फाई दिस डाइफरेंटाइन इक्वेशन. तो अच्छा, अब मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि अगर हमें प्रोडक्ट 1 चाहिए तो हम ऐसे कौन कौन से नंबर दे सकते हैं. अच्छा, लेट्स से वी हैव अ नंबर a एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/a. अगर ये दो नंबर्स में मल्टीप्लाई हुए तो फिर इसका आंसर भी तो 1 होगा. तो thus we can also substitute that in the equation. तो यहाँ मैंने वर्किंग की है to take x minus y is equal to a and the other factor to be 1/a. यहाँ I didn't really reach ये सारी मैंने वर्किंग की है substitution वही simultaneously solve करके. यहाँ I didn't really reach a single integral solution, but यहाँ I did reach a very general answer for y and x. यहाँ y के लिए for our answer for y मैंने बेसिकली ये निकाला -6a plus minus under root 12a square plus 24 into a to the power -1 divided by 36. और यहाँ a needs to be a multiple of 36 and an integer for basically for our answer of y to also be an integer. Of course we don't want y to be rational, we want it to be an integral value. ऑफ कोर्स यहाँ x और y की ऐसी वैल्यू आ जाती है. अब दूसरी साइड पे मैंने क्या कहते हैं उल्टा कर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/a और x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू a. बेसिकली मैंने जहाँ मैंने पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू a लिख लिया था एंड वाइस वर्सा, तो इस बार मैंने उल्टा कर दिया साहब. तो इस बार हमारे पास y की इस तरह वैल्यू आती है विच इज वेरी सिमिलर. यहाँ बस जो हमारी पावर्स है ना उनका साइन ऑपोजिट हो जाता है. इफ यू हैव नोटिस्ड कि यहाँ हमारे पास जहाँ a है वहाँ हमारे पास a टू पावर -1 आ जाता है, जहाँ हमारे पास a स्क्वायर है वहाँ हमारे पास a टू पावर -2 आ जाता है, जहाँ a-1 है वहाँ a आ जाता है. इस तरह से ये मैंने गलती से 24 लिख दिया, ये है 12 लाइक जस्ट लाइक द फर्स्ट इक्वेशन. And यहाँ भी a needs to be an integer divisible by 36. Basically this all of this has to be an integer divisible by 36. That's how I did the generalization. Acha, now for part B, we have another Mordell equation, y square is equal to x cube minus 7. So yeah, of course हमारे पास Mordell equations पहले भी आई थी.
in question number 2, basically part 2 of this question. इसके अंदर basically मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया कि मॉडल इक्वेशन होती क्या है. अच्छा, दिस क्वेश्चन व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग आई ऑलरेडी फाउंड सॉल्व्ड ऑन द इंटरनेट, जिसकी मैंने यहाँ लिंक भी भेजी है. लिंक भी मैंने यहाँ डाल दी है. y square is equal to x cube minus 7 has already been discussed on the core of forum. सही है, इंटरनेट ऑनलाइन फोरम के ऊपर इट्स बीन डिस्कस्ड एंड आई एडेड द लिंक है यहाँ. लेकिन मैंने जनरल एक सोल्यूशन डाल दी है यहाँ. ऑफ कोर्स बेस्ड ऑफ ऑफ इंटुइशन, अगर हम वैसे क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर यूज करें तो हमारे पास ये आंसर तो आ ही जाता है ना, 2 and plus minus 1. To find another solution we add it to itself, which is finding its tangent. सही है. ये बेसिकली वही प्रोसेस बेसिकली यूज होता है इलिप्टिकल कर्व वाला. इलिप्टिकल कर्व के ऊपर ही ये प्रोसेस यूज होता है. एंड वी ओनली हैव two integral solutions for this model equation, which are 2 comma basically 4 solutions अगर हम plus minus को separate करें तो 2 comma plus minus 1, and then our second, third and fourth answers would be 32 comma plus minus 181. These two are the only yet found integral solutions of this model. I think Ryan has left the talk. Might be internet problem. Oh yeah, he's there. He's there. Hello, I'm sorry. Yes, yes. मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, disconnected. No problem. No problem. But यही थी मेरी Yes, solution. इसके बाद आपको मैं शेयर करता हूँ. मेरे पास आपका सॉल्यूशन है. If you इसके wanna बाद वो बस continue. लास्ट पार्ट था और फॉर द रिसर्च, और वो भी मैंने आपसे पूछना था कि मतलब उसका आंसर किस फॉर्मेट में देना है, किस तरह से देना है. लास्ट पार्ट है ऑफ एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट. Here's your suggestion. Go on. यस, इसका भी मैंने पूछा था कि सजेस्ट एंड स्टडी एडिशनल डायरेक्शंस ऑफ रिसर्च का मतलब हमने आंसर देना किस तरह से. एक जनरल एक ये पैराग्राफ में मैंने दे दिया था. ठीक है. बट That is fine. खैर दैट इज माय कंट्रीब्यूशन. मैंने Hmm. क्या किया. इसमें एक तो ये कि you did research for the question. That is good. You covered a lot of elliptic curves. That is very interesting. ये elliptical curves नहीं है, ये elliptic curves है. Elliptical curves नहीं है, elliptic Oh, curves. I'm sorry. No, that's That's fine. That's just minor, detail. Let's start with this thing on the screen. Suggestions, the additional directions of research. तो आप इसमें अदर डायरेक्शंस में ये होगा ना कि जो आपके गिवन प्रॉब्लम्स है उस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स आप सजेस्ट करें. और बेहतर ये होता है जो इंटरेस्टिंग केस सिनेरियोस होते हैं, ये जो इलिप्टिक कर्व आपको गिवन है ना क्वेश्चन नंबर जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है, आपने शुरू करवा दिया मुझे, सो नाउ आपको सुनना पड़ेगा. दिस इलिप्टिक कर्व इज यूज्ड इन इंक्रिप्शन. ठीक है, जो आपके व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन. डू यू यूज व्हाट्सएप? व्हेन यू स्टार्ट चैट विद अ न्यू पर्सन इट सेज दैट योर chat is end-to-end encrypted, right? So not essentially the same curve but a similar curve. और जो blockchain और वो सारी चीज़ें हैं, bitcoin and all that, तो ये elliptic curve जो है वो यूज़ होता है practically. तो जो suggest and study additional directions of research वाला प्रॉब्लम है उसमें आपने इस तरह की किसी चीज़ को पकड़ के कहना है कि हम इस चीज़ को यूँ कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर सकते हैं, या कोई इंक्रिप्शन या कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कुछ ना कुछ
मतलब उस तरह की चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है कि जो वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग हो। ठीक है, इसमें ये भी नहीं कि आपने कोई पीएचडी थीसिस का टाइटल जैसे होता है कि उसमें एक बंदे ने बहुत स्पेसिफिक चीज़ को 1 साल तक उसको स्टडी किया है, उसमें से रिजल्ट्स और थ्योरम्स बनाने की कोशिश की है। उस तरह भी नहीं करना, इसको इंटरेस्टिंग भी करना है, यूज़फुल भी करना है, और यानी कि रिसर्च के काबिल इसको आपने समझ के बनाना है। और जब बनाएं तो उसमें 2-3 मोटिवेशंस आप जनरली देखें कि आप किसी भी प्रॉब्लम के जहाँ पे आपको वो कह रहा है कि सजेस्ट एंड स्टडी एडिशनल डायरेक्शंस, तो सजेस्ट का मतलब ये है कि आपने सजेस्ट कर दिया कि हम इसको इस कर्व के बजाय हम ये वाला इलिप्टिक कर्व चूज़ करें और उसके रेशनल पॉइंट्स की बात करें। तो इफ आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इलिप्टिक कर्व्स के, उसमें जो रेशनल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, रेशनल का मतलब है कि एक्स और वाई रेशनल हो, ठीक है, रेशनल नंबर्स हो। देयर इज नो सच एल्गोरिदम टिल दिस मोमेंट के जब हम बात करें कि वो आपको इलिप्टिक कर्व आप उसको दे दें और वो आपको कहें कि यार ये लो भाई आपके 2 रेशनल पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर। तो ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है, जो कि आपने मेंशन भी किया था कि ब्रूट फोर्स और इस तरह के। देयर आर सम कर्व्स they come with rational points, there are some curves they come with integer points even. We can construct curves with integer points, यानी कि हम खुद चाहें बना सकते हैं जिनके ऊपर खास integer points हों। So that was a bit of extra other than comment on your problems. So अच्छा, ये प्रॉब्लम्स क्योंकि जो ये वाला प्रॉब्लम था, आई थिंक इसका सॉल्यूशन मुझे सही लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, द कैलकुलेशन सेम ओके, तो मैंने सरसरी नज़र डाली थी। इसका जो सॉल्यूशन था द्वारा पे प्रोबेबली सॉल्व हुआ है, तो जो आपने एक्सप्लेन किया दैट इज करेक्ट। अच्छा, एक जो जनरली हम जब मैथमेटिक्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो सॉल्यूशंस गेस करते हैं, सॉल्यूशंस को हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, या उसको कहना चाहिए कि हम ट्रायल एंड एरर वाले सॉल्यूशंस ही ढूंढते हैं। तो दैट्स अ मैथमेटिकल मेथड, सो देयर इज नो हार्म इन टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट यानी कि आप उसमें 0 चेक करें, 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरह से 2-4, यानी कि in between -10 and 10 you can brute force it, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप अपने मेंटल कैलकुलेशन से ही ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप x को 3 रखते हैं तो यू ट्राई टू फाइंड, यानी कि करना ये होता है कि आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब -7 है, तो x को 0 रखें, तो y is -7 which is not a square, so माइनस वाले पॉइंट्स को भूल जाए क्योंकि आयोटा अपीयर हो रहा है, so you just get rid of the negative and 1 रखें, 1 -7 is -6, still no hope। 2 रखें तो 8 -7 is equal to 1, 1 is a square and इसका स्क्वायर है, y is equal to +-1, you get a solution, ठीक है। तो x को जब 2 रखेंगे तो y +-1, यानी कि इसमें ये है कि y और -y both are the solutions, तो एक सॉल्यूशन फाइंड करना और उसको माइनस करने से दूसरा सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ये अगर आप जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं ना ऊपर जितने, उसमें अगर आप देखें तो देयर इज अ सिमेट्री अलोंग दिस एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो पॉइंट यहाँ पे होता है, अच्छा इस कर्व की, इस शेप के लिए इलिप्टिक कर्व की, कि जिसमें वाई स्क्वायर, जनरली अगर इलिप्टिक कर्व को लिखें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, A and B are coming from field. Uh, Ryan, are you there? Okay. Yes, I'm here. So हाँ हाँ, अब यहाँ पे जो जो पॉइंट प्लस वाई के लिए सेटिस्फाई होता है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन माइनस वाई के लिए भी सेटिस्फाई करता है, तो ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर की वजह से ये चीज़ होती है। Now what you do is
जो इलिप्टिक कर्व के ऊपर ना एक लॉ हम डिफाइन करते हैं, वो ये कि अगर ये इलिप्टिक कर्व हम कंसीडर करें और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट फाइंड करते हैं और उस पॉइंट से एक लाइन को पास करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें नए रेशनल पॉइंट्स बता देता है। ठीक है, जो काम यहाँ पे आपने इस फॉर्म से इस इक्वेशन को बना के किया है, यानी कि इस लाइन के ऊपर या तो आप अगर दो पॉइंट्स हैं, दिस इज लेट्स से P, दिस इज Q, then we can find this third point R. There is a way जो कि यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, 9th-10th के लेवल पे है, यू जस्ट टेक अ लाइन और वो सारी चीज़ कि इसके एक्स वाई आप कोऑर्डिनेट्स ले लें, इसके एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट्स ले लें, लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, आर की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो यू कैन फाइंड थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट भी रेशनल होगा, वो इसलिए रेशनल होगा क्योंकि आपके पास जो इसमें सब्सटीट्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ रेशनल हो रहा है, तो थर्ड पॉइंट का रेशनल होना गारंटीड है, इसमें ये चीज़ यूज़ की है। एंड व्हेन यू ट्राई टू सब्सटीट्यूट दिस थिंग फॉर वाई, आपके पास एक नई इक्वेशन बनती है, जो कि क्या बनती है इस केस में, बनती है 6x स्क्वायर माइनस 11 6x सॉरी 6x माइनस 11 होल स्क्वायर, ये यहाँ कुछ भी नहीं, स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब और x क्यूब माइनस 7। यहाँ से आपको x के दो नए वैल्यूज और x के कोरिस्पॉन्ड फिर y की x के वैल्यूज और y की वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब एक चीज़ में और नोटिस करने वाली है कि जब आपके पास क्यूबिक इक्वेशंस हैं, तो या तो तीन रियल वैल्यूज या इंटीजर वैल्यूज कहें वो मिल सकती हैं। अगर इसमें हमें इरेशनल कोई वैल्यू मिलती है, तो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 या इस तरह का कोई नंबर मिले, तो ये प्लस माइनस के साथ हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें से जो एक इंटीजर वाला सॉल्यूशन होगा उसको आपने कंसीडर करना है, जो रेशनल वाले दो पेयर्स हैं उनको आपने छोड़ देना है, क्योंकि डाइफेंटाइन इक्वेशन है, तो आप इंटीजर सॉल्यूशन की ही बात करें, अदर देन इंटीजर सॉल्यूशन इसके ऊपर जो ये सारा जो आप ड्रॉ करते हैं ना, जो आपने प्लॉट किए हैं, वो सारा रियल सॉल्यूशन है इस कर्व का, रियल नंबर्स के ऊपर। उसकी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स की देखते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हों, या इन जनरल जो इसके रिलेटेड रिसर्च एरियाज हैं उनमें रैशनल जो है पॉइंट्स फाइंड करने की जो है वो बात होती है। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट, गुड रिसर्च इंडीड कि आप एटलीस्ट गूगल से ही अपनी चीज़ को समझ के एक्सप्लेन किया, विच इज़ गुड। और मॉडल कर्व और लुई मॉडल, अभी टाइम बहुत हो गया, मैं इस पे फिर किसी दिन हम बैठ के बात करेंगे। सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कमेंट के लिए भेजा था, इस पे भी हम बात करते हैं। मैं मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत आप लोग पक गए होंगे मेरी बातें सुन सुन के। सो अच्छा, इस प्रॉब्लम में जो आपने एक तो माइनर सी करेक्शन है, वो ये कि ये जो नोटेशन है ना, ये नोटेशन हम लेते हैं 0 से 1 तक की लेंथ इंक्लूडिंग 0 एंड 1। जो आपका ये सेट है, इसकी जो करेक्ट नोटेशन है वो ये है, जो करली ब्रैकेट्स के साथ ये मतलब सेट है जिसमें 0 और 1 पड़ा हुआ है। दिस इज नॉट अ सेट विद 0 एंड 1, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ओके, so don't make these mistakes, इस तरह की मिस्टेक्स आप करेंगे तो दिस विल लीड यू टू लूजिंग मार्क्स और दैट। तो यहाँ पे आप ये वाले ब्रैकेट्स यूज करें जस्ट टू यूज द प्रिसाइज नोटेशन। ओके, और उसके बाद आपने जो काम किया है वो देखें
कि z क्रॉस z आपने फाइंड किया है, इसको भी अगर आप सेट्स में लिखते, ये भी फाइन नोटेशन है, बट सेट्स में लिखते तो दैट वुड मेक एन इंटरेस्टिंग एक भरम आपका बन जाता कि आप जो है ये इस तरह के नोटेशन है। ठीक हो गया। हाँ, सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल पूछता क्या है। सवाल ये कह रहा है कि आपने इस पे हमने कल बात की थी, शायद आप कल नहीं थे, तो मैं दो चार बातें दोहरा देता हूँ। कल वाली रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। सो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो m यहाँ पे है, जो ये वाला नंबर है कांस्टेंट ऐड हो रहा है, इट हैज नो कनेक्शन टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए एक चीज मैंने शायद यहाँ पे नोट भी की है, इट्स कॉल्ड हेसेस थ्योरम। हेसे वाज अनदर big giant in elliptic curves and all analytic number theory। तो वो आपको ये बताएगा कि हर प्राइम के लिए एक रेंज बताएगा कि इतने से लेके इतने पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो उसका प्रूफ खैर मजीद कॉम्प्लिकेटेड है आपके लेवल के लिए, बिकॉज इट यूजेस ग्रेजुएट लेवल मैथमेटिक्स टू प्रूव द रिजल्ट। लेकिन ये है कि आप स्मॉल प्राइम्स के लिए ये रेंज आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। एलिप्टिक कर्व्स पे बहुत वेबसाइट्स हैं जो आपको रेशनल पॉइंट्स फाइंड करके देते हैं, यानी कि आप जनरल एलिप्टिक कर्व लिखे और ए और बी को वेरी कर आपको रेशनल पॉइंट्स क्या होंगे वो आपको फाइंड करके देते हैं। यू कैन इंस्टेड ऑफ doing the experiment by calculations by hand, you go to a website which prints out the elliptic curve like this, plus a x plus b and number of rational points। आप उसमें a को 0 रख लें, b को फिक्स रख लें, प्राइम इज इक्वल टू आप 2 रख लें, प्राइम इज इक्वल टू 3 रख लें, ऑल द प्राइम्स के लिए वेरी करवाते जाएं और देखें कि हर प्राइम के केस में कितने इलिप्टिक कर्व के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें एक छोटा सा जो जो पॉइंट जिसका आपको ख्याल रखें कि वहाँ पे कभी कभी पॉइंट एट इन्फिनिटी को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, पॉइंट एट इन्फिनिटी इज इंक्लूडेड इन दिस सेट समटाइम्स, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इट इफ इट इज एडिड देयर विल बी वन मोर पॉइंट्स, काउंटिंग में एक ज्यादा आएगा लेकिन डिस्प्ले में शायद वो शो ना करे, तो उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। या ये मत कहना कि ये वेबसाइट तो दिखा 5 रहा है बता 6 रहा है, तो इस चीज़ से आप घबराना नहीं। एंड इस प्रॉब्लम के लिए ना आप एक और चीज़ जो है ना स्टडी करें, थोड़ा सा रिसर्च करें। 1 घंटे की रिसर्च से मेरा ख्याल है ये चीज़ आप कर लेंगे। वो क्या है? वो चीज़ ये है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एम। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसको प्राइम मॉड्यूलाई में, मॉड प्राइम्स के अंदर। फिलहाल हम हर प्राइम को रख लेते हैं, बाद में ये वाला कंडीशन भी हम देखेंगे कि ये क्यों अराइज होता है। और इसमें ये देखिए कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस एम ये चीज़ देखें तो ये कब स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि एम की और एक्स क्यूब की वैल्यू। अब आप देखिए कि यहाँ से अगर हम देखें एक्स क्यूब कब हमें स्क्वायर्स देता है, एक्स क्यूब प्लस एम कब हमें स्क्वायर्स देता है। क्या इस एम का यहाँ पे होना नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे कोई फर्क डाल रहा है या फर्क नहीं डाल रहा? अगर फर्क नहीं डाल रहा तो आपका काम हो गया कि जो एम है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं डाला, क्योंकि अगर m के होने और ना होने से जितने स्क्वायर्स हमें मॉड प्राइम के अंदर मिलते हैं, यानी कि स्क्वायर्स हमें प्राइम के अंदर मिलते हैं, कितनी दफ़ा ये जो चीज़ है वट एवर इज ऑन द राइट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, वो जीरो के नहीं, वो किसी स्क्वायर नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, वो किसी स्क्वायर नंबर के इक्वल होता है इनकी किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि m का यहाँ पे अपियरेंस डजंट मीन एनीथिंग। एम कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एम से।
ठीक, समझ आ गई बात कि आपने ये प्रूव करना है बस कि m यहाँ पे स्क्वायर्स जो होंगे उनमें m किसी भी तरह से कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। सो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस x y है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ये मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y, ठीक है, वो हमारे m के ऊपर किसी तरह से डिपेंड नहीं करते। जो आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया था choosing x and y equals to these numbers, वैसे ये this is not the appreciated approach, क्योंकि आपने x और y को ब्रूट फोर्स टेस्टिंग से किया है। ब्रूट फोर्स टेस्टिंग ठीक है, आप मॉड 2 में कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जनरलाइज करने के लिए तो 2, you go to 5, you go to 11, you go to 17, जो 3 मॉड 2 मॉड 3 वाले प्राइम से, इसको भी मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, ये भी मुझे 2 देगा, ये भी मुझे 2 देगा, तो ये सारे प्राइम्स हैं। लेकिन इन प्राइम्स के अंदर आप करके भी जनरलाइज की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, तो ये वाला काम बाय हैंड या ब्रूट फोर्स करना इन बड़े प्राइम्स के लिए, इट इज too much of a work. It's quite pain in the neck. Okay, so don't my suggestion would be don't go for the experimentation like this way. Now instead आप यहाँ पे एक कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे थे कि आप m यहाँ पे क्या हो सकता है, m कैन बी इधर 0 और m कैन बी इक्वल टू 1, बिकॉज मॉड टू में जब रिड्यूस करेंगे तो इवन है तो 0 आएगा, और है तो 1 आएगा। और ये इक्वेशन रिड्यूस ऐसे होता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ये जो m है, ये ऑल इन ऑल दे गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आखिर में कांस्टेंट है वो रिड्यूस होगा या ये इक्वेशन पूरा जो रिड्यूस होगा, वो ऐसा नहीं होता, वो इक्वेशन कंप्लीट रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जो मैंने हिंट भी लास्ट कमेंट में दिया था वो भी यही था कि आप देखें कि ये जो पार्ट है ये कितनी दफ़ा स्क्वेयर्स को हिट करता है और कितनी दफ़ा m के साथ स्क्वेयर्स को हिट करता है, और m का यहाँ पे क्या क्या किरदार है उन प्राइम्स के अंदर जिन प्राइम्स की शेप ये है। गॉट इट? यहाँ पे मैंने I try to list the some of the primes that you can try to find the solution in. The other direction जो प्रॉब्लम 4 के आंसर में हो सकते हैं कि why other primes do not have this property like the primes that are 3k plus 1, वहाँ पे क्या m का किरदार है, that would be a different direction of investigation for you. And what happens when we show we try to find a pattern for all the integers, not only primes, यानी कि इसको आप reduce the equation by 6 and look for what are the possible solutions, या आप 6 के बजाय स्क्वायर्स में कर लें 4, 9, 16 वगैरह वगैरह। You try to take some interesting cases and maybe find some publishable results as well, at least I'm hopeful. और जो मैंने यहाँ पे I said कि this is not what we do when we mod this with n. So this is not the real way to, instead of try to look for this. और इस प्रॉब्लम को मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। दिस प्रॉब्लम इज asking you to classify all integers and let me choose a different color. तो आपने क्या करना है कि n belonging to natural numbers and you have to find n as some function of n dependent upon m, such that what happens that there is at least one solution, यानी कि जो given equation है y square is equal to x cube plus m mod n का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन दें आप। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है? लेट्स से कि एक सॉल्यूशन मैं कहता हूँ कि 0 0 हो सकता है, तो
m और n की क्या 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 कंडीशन होगी इस केस में, कि जब मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन 0 होगा, उस केस में m और n, m को n का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है, n को m का मल्टीपल या m को n का मल्टीपल। जब आप एक फंक्शन फाइंड करें तो उसका इनवर्स m को इन टर्म्स ऑफ n और n को इन टर्म्स ऑफ m आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये है, या आप एक और काम भी कर सकते हैं कि why you don't try to find something like y square is equal to x cube plus n times some integer k plus 1। अब मैंने m की ये वैल्यू रख ली है, ठीक है, m मैंने क्या रखा, n टाइम्स सम इंटीजर प्लस 1। अगर मैं इसको मॉड n करूँगा तो मॉड n में ये इक्वेशन रिड्यूस होगी, क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये n टाइम्स k तो मॉड में 0 हो जाएगा, ये 1 सीधा सीधा नीचे आएगा और आपके पास m mod n, you will end up with this equation, and for this equation there are solutions, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए आपके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, और यू कैन ट्राई टू फाइंड इन अदर वर्ड्स टेक दिस टू बी -1, जो ऊपर था इसमें आप माइनस रख लें, एंड you have a factorization of this in terms of x into x square minus 1. Even you can further simplify this into x plus 1 and x minus 1. You can factor the right part in terms of this, और यहाँ पे y square है, सिंपली y को 0 रख लें एंड x के आपके पास 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। और एक राज की बात बता दूं कि इस केस में ना यही पॉसिबल सॉल्यूशन से कोई और सॉल्यूशन नहीं है, और ये फरमान ने प्रूव किया था, फरमा प्रूव दिस दैट these are the only points on this curve, ठीक है, आप इसको यानी कि यूज दिस फरमास थिंग, एंड इस क्वेश्चन पे आप चक्का मार सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके। इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको m क्या करना पड़ेगा, m रखना पड़ेगा n टाइम्स k माइनस 1, यानी कि जो भी आप जिस नंबर से भी आप रिड्यूस कर रहे हैं उससे एक लेस हो। अगर 5 से रिड्यूस कर रहे हो तो m क्या होना चाहिए, m 4 होना चाहिए। हमें एटलीस्ट एक नहीं, हमें एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन गारंटीड है। यहाँ से तो 3 है, चौथा कौन सा, चौथा वो पॉइंटेड इन्फिनिटी वाली चीज़ जो मैं पहले आपको बता रहा था, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम में आप देखें कि ये इक्वेशन आपको गिवन है, ओके, इस इक्वेशन में आपसे पूछा ये जा रहा है कि ट्राई टू डिटरमिन ऑल एट लीस्ट सेवरल, ठीक है, ऑल या सेवरल इंटीजर्स a और b, a और b के वैल्यूज आपने फाइंड करने हैं, दैट नो 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 सॉल्यूशन इन नॉन जीरो इंटीजर्स। समझ आ रही है कि ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि x और y के इंटीजर सॉल्यूशंस नॉन जीरो में नो सॉल्यूशंस, इट मीन्स के जीरो में यस सॉल्यूशंस, लाइक जो यहाँ से आप नो को हटाएंगे तो ये चीज हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम जो है ट्रांसलेट हो जाएगा कि जो नो सॉल्यूशन इन नॉन जीरो, इट मीन्स के सॉल्यूशन इन जीरो, ठीक है। अब सॉल्यूशन इन जीरो का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है मेरे ख्याल से के बी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाए इस प्रॉब्लम में, किस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि ये ही वो केस है कि जिसमें 0 0 ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ओनली 0 इज द सॉल्यूशन, ठीक। अब आपने वो सारे केसेस फाइंड करने हैं, वो सारे केसेस फाइंड करने हैं कि जिसमें ये इक्वेशन सिंगुलर, इसको बाय द वे सिंगुलर भी कहते हैं, सिंगुलर में रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सिंगुलर में रिड्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, होना ये पड़ेगा एक
मेरे ख्याल से एक इसका पॉसिबल जो है वो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, और इसमें देखें कि फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या ज़ीरो है। अगर आप कांस्टेंट यहाँ पे रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब ये ए ज़ीरो होगा, और इन अदर केसेस के जब बी के साथ जो कोएफिशिएंट है वो यू मेड अ मिस्टेक हियर, ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे प्लस है। तो जो जो अदर केसेस है उसमें ये होना चाहिए कि आपके पास ए स्क्वायर शुड सॉरी ए क्यूब इज इक्वल टू के टाइम्स बी स्क्वायर। के जब पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ पे जो है ना एक्स है क्यूब के साथ, यहाँ पे वाई है स्क्वायर के साथ। इन दोनों को कैंसिल करने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हम लेके आना चाह रहे हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू के टाइम्स बी स्क्वायर व्हेन के इज ग्रेटर देन टू। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, टू से बड़ा है, उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, या यूं कह ले कि a is equal to k and b is equal to k, then what happens कि a की जगह हम k का क्यूब कर लें और यहाँ पे k टाइम्स k का स्क्वायर कर लें तो ये भी k का क्यूब हो जाएगा, और this will cancel from both sides of the equation and this will reduce to singular y square is equal to x cube। इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। ओके, और जो इसके सॉल्यूशंस आपने यहाँ पे लिखना चाहती, दिस इज द एलिप्टिक कर्व फॉर y square is equal to x cube -27 है। वैसे देखा जाए ना तो ये जो एलिप्टिक कर्व है उसको आप -10 से 10 की रेंज में देखें, ये 200 की रेंज में, ये हमें यहाँ पे जो इसका जो बबल सा बनता है वो नज़र नहीं आता, या इवन कुछ केसेस में इलिप्टिक कर्व की ये शेप होती है। दिस इज बाय द वे कॉल्ड द एग ऑफ इलिप्टिक कर्व। आई डोंट नो व्हाई बट द फनी थिंग के इसको एग ऑफ इलिप्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, so in some cases it comes in two disconnected parts, otherwise this is just all one curve। तो मेरा ख्याल है इसका सॉल्यूशन कुछ इस डायरेक्शन में आपको चल के इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मिल जाना चाहिए। और ये जो solutions है, these are quite a few cases when we have integer you know integer solutions। ठीक है, integers sits inside rational, so ultimately we have rational solutions। and इसमें देखें ना, जो कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे कि इसमें 5 का केस देख ले, 2 का केस देख ले, 1 सॉल्यूशन है, 11 के केस में नो सॉल्यूशन है, 17 के केस में देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस, तो 23 के केस में नो सॉल्यूशन है। तो इसमें कोई ख़ास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की तादाद आपको एग्जैक्ट 1 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप क्योंकि यहाँ पे काउंटर एग्जांपल्स है ना, अगर मिल जाए तो यू प्रोबेबली गेट वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स फॉर मैथमेटिक्स। आई थिंक आई शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट। और जो बातें मैंने की शायद कुछ गलत हो सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने सरसरी देखे थे और आपने जो सॉल्यूशंस किए थे तभी मैंने इनको प्रॉपर थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखा था। जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। सो कहते हैं टेक माय वर्ड्स विद द डिग्री ऑफ डाउट कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मुझे समझ आ रहा है यही है। एनी क्वेश्चंस? नो, इट्स फाइन। जहाँ तक आपने एक्सप्लेन किया मुझे समझ आ रही थी। कुछ हेल्पफुल था, यानी कि वाज देयर एनीथिंग दैट यू फाइंड यूजफुल? आई होप के मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ 1 चीजें, का मुझे हाँ। मतलब एक वो समझ आ गई कि मतलब एक और तरीका मतलब
एक और तरीके से करूँगा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 बेसिकली। हाँ हाँ, तरीके तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन जो हम सही तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये तो नहीं बता सकते। अलबत्ता मैथमेटिक्स में ये बता सकते हैं कि तरीका गलत कौन सा है। अगर जो आपको बिल्कुल इर्रेलेवेंट, और मैं आपके सॉल्यूशन को नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार ये कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। और प्रॉब्लम को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किए बगैर उसका सॉल्यूशन बता ही नहीं सकते। तो ये अच्छा है कि आपने बहुत सारी रिसर्च इस प्रॉब्लम के ऊपर की है, लेकिन अगेन जो कल भी हमारी बात हुई थी, वो ये कि द solution to question number 4, 5 and 6 are getting overlapped. Many people are attempting 6, a few people are attempting 4, जो कि हमें इन क्वेश्चंस की तादाद भी बढ़ानी है। एंड आई वाज होपिंग कि शहर बानो शायद आज प्रॉब्लम 7 अटेम्प्ट करें, सूडो मैट्रिसेस वाला, या कोई और प्रॉब्लम करे। बट इट इज़ गुड के जो डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम था वो आपने किया, जो कि आई डोंट रिमेम्बर कल के टॉक में किसी ने किया होगा। और एक और चीज़ ये भी जहन में रखें कि आपने सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं करना है कि एक प्रॉब्लम जाके प्रेजेंट कर दिया, उनके ऊपर फेंक दिया और वापस आ गया। नहीं, आप अगर प्रेजेंटर के बजाय आप अगर जो रिव्यूअर हैं, देन यू शुड नो कि इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन आगे वाला बंदा दे रहा है या गलत दे रहा है। दैट इज़ व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स एटलीस्ट, के जो प्रॉब्लम है उस उन प्रॉब्लम्स को समझने तक तो आप सारे प्रॉब्लम समझें। अब किसी ने भी आपके ग्रुप में अगर प्रॉब्लम 5 या प्रॉब्लम 10 अटेम्प्ट नहीं किया और आपके सामने एक बंदा प्रॉब्लम 10 अटेम्प्ट कर रहा है, तो इट वुड बी like someone is speaking some foreign language, आपके सामने कोई चाइनीज में बात कर रहा है और जो आपके समझ से बाहर है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप प्रॉब्लम्स को समझने तक सारे समझें, हर बंदा हर प्रॉब्लम समझे, अटेम्प्ट करने की हद तक हर बंदा एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे टू बी ऑन द सेफ साइड। और एज ए टीम आप एटलीस्ट 7 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, अगर आप वो स्किप करना चाहे, यू कैन पास द प्रॉब्लम एंड चूज एंड गेट अ चांस टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम जो आप प्रेजेंट करना चाहें। और प्रेजेंटेशन आपने तो अपने सॉल्यूशन से डिस्कस किया, आपने इसकी स्लाइड्स भी बनानी है। और स्लाइड्स भी मैं एक सैंपल शेयर करूंगा कि जो मैथमेटिक्स के स्लाइड्स हैं वो किस तरह की हैं। उसमें आपने थ्योरम्स को स्टेट करना है जो आपने यूज़ की हैं, बड़े बड़े रिजल्ट्स आपने उसमें लिखने हैं। आपने जो है कैलकुलेशंस उसमें नहीं करनी, आपने सिर्फ ये बताना है कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ कोई बहुत बड़ी और इसको फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे ये 3 फैक्टर्स मिलते हैं। आपने इक्वेशन और बाय फैक्टराइजेशन लिख दिया और ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपने अपने जो सबमिशन है उसमें आपने पूरा डिटेल उसका प्रूफ लिखना है कि जब आप उसको फैक्टराइज करते हैं, जो आपने यहाँ पे किया था, कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स अज्यूम कि इसकी फैक्टराइजेशन ये है, तो आपने ये दरमियान के 4 स्टेप्स स्किप करके ये 2 स्टेप्स आपने लिखने और बताना है कि यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन की तो आपको ये मिल गया। और इसमें जो आप सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो भी एक है चीज़। और इसमें आपने लेटेक्स वाली चीज़ें भी हैं कि आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो लेटेक्स में सबमिट करवाएं, विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। क्योंकि एटलीस्ट आपका सॉल्यूशन अगर पार्शली उसमें कोई फ्लॉज भी हैं तो इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड। वो कम से कम लिखाई उसकी खूबसूरत है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इट इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। अब ये देखें जो जो प्रॉब्लम्स इन्होंने लेटेक्स में लिखे हैं, दे लुक नाइस, बस उनको देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। सो
look out for these problems as well. इसमें मैंने कुछ starting का बताया था कि एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स कैसे बनाने हैं कुछ स्मॉलर केसेस के लिए, और फिर you can take the calculations to generalize form. और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमने डिस्कस किए हैं. आपसे यही गुजारिश है कि आप ये जो हमारी डिस्कशन है इसमें आज आप लोग आगे, बाकी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, विच इज़ नॉट हाईली अप्रिशिएबल. एटलीस्ट ये डिस्कशंस सबके लिए यूजफुल है. इट्स नॉट अबाउट कि आपने प्रॉब्लम 4 करना है तो यू हैव टू लिसन एंड everybody can stay at home. It shouldn't be like this. So if you have no questions, we can wind this up. And I don't think Imran sir is still with us. Otherwise he would have commented. I can see Tahir sab here. If sir आप अगर कुछ कहना चाहें तो please go on. Otherwise we are closing this event. और 2 घंटे से 1-2 मिनट ऊपर भी हो गए हैं. शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची हम तक. So Ryan, have a good evening then. We shall close this. ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना. अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं ग्रुप के अंदर पूछ लूंगा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. कुछ भी पूछना हो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज always ask your questions. So shall we end this here? या ये इमरान साहब ही कर सकते हैं? Okay then मैं इस मीटिंग को लीव करता हूँ, and I will request Imran साहब to end the meeting.